गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू ऑफिशियल चैनल ऑफ जनरल एकेडमी। तो आज डेली करंट अफेयर सेशन को आउथरा आपण मानक स्वागत करूची। हमर आज सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहबा को जाउची, बहुत गुड इंपोर्टेंट न्यूज़ अछि आ हमर क्विज सेशन मध्ये इंटरेस्टिंग रहबा को जाउची। तो काइंडली सेशन को एंड पर्यंत देखंतु आ वीडियो जदी भल लागिता निश्चय लाइक करंतु, ठीक अछि। हमर आज सेशन बहुत माने बहुत कंटेंटिव होची, तो सेति सेशन को एंड पर्यंत देखियो को रिक्वेस्ट करछी। तो तो आमर डेली आम जहाँ करवा पूर्व किसी कौन मोटिवेशनल थॉट रही है आम कौन वर्क टू योर गोल विथ फर्मली एंड विथ बोल्ड स्टेप्स। आपण जब निजर गोल किसी सेट कर जहाँ भी आपंकर जहाँ भी कम कर दैट शुड बी मैंने कौन निजर से गोल गोल पाख पहुँचापी से निजर एक्शन हेल्पफुल हबार अच्छे। एवरी स्टेप शुड बी टुवर्ड्स योर गोल फॉर अचीविंग योर गोल। जहाँ किसी भी कम एटलिस्ट छोट स्टेप्स भी हो बट यू शुड वो कौन आपंकर से जहाँ भी कम करुँच सब जीवार अच्छे आपंकर गोल को अचीव करने कम करार अच्छे, ठीक अच्छे। बट आउ कंसिस्टेंटली करार अच्छे। आज करदेवी ना काली करदेवी सेमती ना, पूरा जहाँ भी करेंगे पूरा कंसिस्टेंटली करेंगे, छोट छोट हो बट डेली करूँ, ठीक अच्छे। तो एमती भाव कम करूँ, यू विल बी रिवार्डेड फॉर योर सक्सेस सून, ठीक अच्छे। तो सेशन आरंभ करवा। जो मैंने भी प्रथम थर पे हमर सेशन देखछन से माने कह दउछ जे कोन हमर फर्स्ट किछि क्विज थाउछ जो थरे हम कोन प्रीवियस करंट अफेयर को रिवीजन करछंती, ता सहित जहाँ भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स को क्विज आकार हम रिवाइज करछंती, तापर हम आज रो किछि डेली न्यूज़ को कवर अप करछंती, ठीक अछि। तो सेशन को पूरा देखंतु। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमर कोन रही आज रो which dedicated FM channel launched by All India Radio to enhance the Mahakumbh 2025 experience। FM channel कौन All India Radio की को जो महाकुंभ 2025 एक्सपीरियंस पाई और FM चैनल इश्यू को मैंने लॉन्च कर दिया। तार ना कौन एक कुंभ घाट वाणी, कुंभ प्रार्थना वाणी, कुंभ वाणी ना कुंभ अनुभव वाणी। और कुंभ प्रार्थना वाणी रहबो, तार आंसर रहबो। नेक्स्ट जीवा which two beaches in Kerala recently received the prestigious blue flag certification। केरला रो दीटा बीच जो माने को कोन ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिली छी, से दीटा बीच रो ना कोन ए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के दोची सेटा मध्ये हम काल देखथिले के दोची हमरो FEE फाउंडेशन फॉर एजुकेशन ऑन एनवायरनमेंट। फाउंडेशन फॉर एजुकेशन ऑन एनवायरनमेंट सी हमरो दोची ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। गोटे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेनमार्क रो यार हेडक्वार्टर अछि डेनमार्क रो गोटे ऑर्गेनाइजेशन से कोन करची कौन ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को दीटा बीच को हमारे कप्पाड़ एंड चाल बीच केरला दीटा बीच कप्पाड़ और चाल बीच को से कौन करছে ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाइए। नेक्स्ट असला द गान नाग की फेस्टिवल और इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। कोस्टी हमारा कौन नाग गान कहीं फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जाउछे मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। और आंसर रहबो हमर मणिपुर रे हमर कोन करा जाय गान नागे फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जाय। सेठी गोटे कम्युनिटी अछंदी जेंग्रा लोय कम्युनिटी अछंदी से माने एही फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जाय गोटे पोस्ट हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, ठीक अछि। जेमिति हमर मकर संक्रांति हम देखथिले, मकर संक्रांति हमर नॉर्थ इंडिया रे माने बना जाय मकर संक्रांति, सेमिति हमर पोंगल साउथ इंडिया रे पोंगल गोटे पोस्ट हार्वेस्टिंग फेस्टिवल साउथ इंडिया रे। तो सेमिति गोटे मणिपुर रे गोटे पोस्ट जेंग्रालियन कम्युनिटी रो गोटे पोस्ट हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होचे कोन गान गाय, ठीक अछि। नेक्स्ट बा हु वाज नेम्ड द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर डिसेंबर 2024। मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर डिसेंबर 2024 पे कहा को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर करा जायछि। कि रहबार आंसर हेबो जसप्रीत बुमराह को करा जायछि, ठीक अछि। ताकर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस जे कि हमर और माने कोन हम कंट्री रो टॉप बॉलर टॉप रैंकिंग बॉलर अछंदी। तो थिबा ताकर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस पे जसप्रीत बुमराह को 2024 रे हमर कोन ताको जो डिसेंबर 2024 पे ताको ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ भाबे डिक्लेयर करा जायछि। नेक्स्ट असला who has been appointed by the RBI to oversees the monetary policy and economic research department। जो इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट और मॉनेटरी पॉलिसी को ओवरव्यू करबा पई कहा को अपॉइंटमेंट करा जाय छै RBI द्वारा। शक्तिकांत दास, राजेश्वर राव, रोहिणकांत पांडे, अजय सेठ।
किए रही आंसर राजेश सर राव को अपॉइंट करा जायछि कोन मॉनिटरी पॉलिसी और इकोनॉमिक रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को ओवरसी करबा आउ रिसेंटली हमर गोटे आरबीआई गवर्नर अपॉइंटमेंट होइछथि तांकर नाम कोन आपण कमेंट बॉक्स रे टिके जणेबे हु रिसीव द सत्यजीत रॉय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन द WBFJ अवार्ड्स 2025 में सत्यजीत रॉय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का दिया जायछि धर्मेंद्र अपर्णा सेन शत्रुघ्न सिन्हा आशा पारेख का अपर्णा सेन को हमर कोन सत्यजीत रॉय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जायछि नेक्स्ट असला which community celebrates the border त्योहार फेस्टिवल border त्योहार फेस्टिवल को कम्युनिटी हमर से सेलिब्रेट करछि और आंसर रहबे कोन सॉरी which community celebrates the border त्योहार फेस्टिवल स्पेलिंग भूल जायछि तो को कम्युनिटी हमर कोन border त्योहार फेस्टिवल सेलिब्रेट करछि कुल्लू ना डोंगरिया ना कांदा ना हाथी कम्युनिटी हमर हाथी कम्युनिटी सेलिब्रेट करछि border त्योहार फेस्टिवल एटा हमर border त्योहार कोटी अछंती हिमाचल प्रदेश रो एई कोन हाथी कम्युनिटी देखा जाउछंती से मानकर फेस्टिवल होछि border त्योहार फेस्टिवल ठीक अछि नेक्स्ट असला which country is India's largest trade partner in the Asian region Asian अर्थात association of Southeast Asian nations तो से रीजन एशियन रीजन रे से रीजन रे हमर की माने को कंट्री हमर गोटे लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर जा से हमर अधिक बिजनेस करा जाउछ इंडिया रो को कंट्री हो आर आंसर है सिंगापुर सहित हमर कोन गोटे सिंगापुर होछ हमर एशियन रीजन रे लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर आ सिंगापुर सहित हमर गोटे मेजर डील मध्ये होबा जाउछ आ सिंगापुर हमर जो प्रेसिडेंट आछन देबे ओडिसा रो विजिट रो मध्ये आछन सिंगापुर रो प्रेसिडेंट जो उत्कर्ष कॉन्क्लेव होबा जाउछ उत्कर्ष कॉन्क्लेव ओडिसा रे होबा जाउछ सेति पई से कोन सिंगापुर रो प्रेसिडेंट मध्ये विजिट रे आछन ठीक अछि नेक्स्ट असला what is the target year for the implementation of NEP 2020 NEP माने national education policy तो 2020 रे जो माने हेतिला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सेटा तार माने कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन पे तार टारगेट ईयर केते 2030 होची तार कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन पे टारगेट आ हमर ओडिसा एबे कोन ओडिसा रे मध्य एबे ए एनईपी 2020 इंट्रोड्यूस करा जाय छै ठीक अछि नेक्स्ट असला हु इज द ऑथर ऑफ द बुक Parliament powers functions and privileges a comparative constitutional perspective गुड बुक रो ऑथर के पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेजेस ए कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव शशि थरूर अरुंधति रॉय कार्ति चिदंबरम रस्किन बॉर्ड के हमर के चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम से हो देखो बुक रो ऑथर पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस ए कंपैरेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव तो ये थिला हमर आज रो ओवरऑल क्विज सेशन आशा करछि हमर क्विज सेशन आपन पे हेल्पफुल रहउतिबो तो चलो तो आज रो डेली न्यूज़ आरंभ करबा हमर कोन गोटे इंपोर्टेंट न्यूज़ गत काली रो जोटा कि 8th पे कमीशन जो माने भी सरकारी चाकरी करछन माने कार्यरत अछन कि जो माने भी गोटे सरकारी चाकरी पे प्रिपेयर करछन से माने को पे गोटे बूस्ट माने मोटिवेशन कहबा को गेले कोन 8th पे कमीशन अर्थात कोन से माने करो जो सैलरी रहउछ बेसिक सैलरी रहउछ सेतिर हमर कोन अछि हाइक होबा को आछुची ए 8th पे कमीशन ताक हमर कोन करछन प्राइम मिनिस्टर मोदी काली सेटा को मंजूरी दे दिछन 8th पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन पे ठीक अछि चलो तो डिटेल न्यूज़ को कवर कर दबा तो पीएम अप्रूव्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th पे कमीशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो माने भी सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर रे काम करबा को जाउछन से माने करछन से माने कोन से माने को भाई गोटे 8th पे कमीशन सेटअप करा जिबो भाई कोन प्राइम मिनिस्टर मोदी से प्रपोजल को अप्रूव कर दिछन द यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 8th पे कमीशन कोन जनवरी 16 2025 रे ताको अप्रूव करछन एक्सेप्टिंग ए डिमांड ऑफ द सेंट्रल ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेड यूनियन और जो एम्प्लॉय मानकर जो ऑर्गेनाइजेशन यूनियन थिला से मानकर डिमांड को एक्सेप्ट करके 8th पे कमीशन पे से कोन 8th पे कमीशन को मंजूरी दे दिछन दाउट ता लागि हेल्पफुल केते जण हेबे
The outcome of the new pay commission will benefit about 50 lakh employees and 65 lakh pensioners of the union government. Union government रो जो कौन सेंट्रल गवर्नमेंट रो जो 50 लाख एम्प्लॉय और 65 लाख एम्प्लॉयज फॉर पेंशनर्स मान आदर उपकृत होगा जाउछंदी तापरे एटा को किए माने इनफॉरमेशन किए जणैचंदी हमर यूनियन इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर की अश्विनी वैष्णव एटा को कोन पब्लिश माने ए इनफॉरमेशन पब्लिश करछंदी सेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड टेकन द डिसीजन टू अपॉइंट द 8th पे कमिशन he said the out the 8th पे कमिशन रे केते जण मेंबर रहउछंती 8th पे कमिशन जी चेयरपर्सन 8th पे कमिशन रे जणे चेयरपर्सन आ दि जण मेंबर्स रहउछंती जणे चेयरपर्सन आ दि जण मेंबर्स इट ऑल ओवर माने समस्त रिटायर्ड जज रहउछंती ए समस्त कोन प्राय रिटायर्ड जज गुडा को माने को अपॉइंट करा जाय चेयरपर्सन और 8th पे कमिशन रो मेंबर्स हिसाब ठीक अछि तो आ कोन होची व्हाट इज पे कमिशन तो आपको में 8th पे कमिशन काहे की कहजो छी काहे कि ना 1947 रो जेतु हमर इंडिया इंडिपेंडेंस आरंभ रो कोन सातटा केतरा सातटा पे कमिशन ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन हे सारची और लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन केबे हितिला 2014 रहितिला 2014 रे लास्ट पे कमिशन कॉन्स्टिट्यूट हेतिला आ ताको इंप्लीमेंट करा जेतला केबे जनवरी 1 2016 एटा मध्ये इंपोर्टेंट 7th पे कमिशन 7th पे कमिशन इन 2014 रे कोन माने ताको कॉन्स्टिट्यूशन करा जायतिला आ इंप्लीमेंट केबे हितिला तार पॉलिसीज गुडा इंप्लीमेंट हितिला 1st जनवरी 2016 टू 2016 टू कोन से हितिला हमर कोन इंप्लीमेंट हितिला द 7th पे कमिशन साल एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज ऑफ रुपीस 1 लाख करोड़ से समय रे केते 2016-17 रे 1 लाख करोड़ एक्सपेंडिचर करा जायतिला 7th पे कमिशन पे The 7th पे कमिशन वाज हेडेड बाय तार चीफ मध्ये कमिशन को किए करथले एके माथुर एटा मध्ये इंपोर्टेंट काहे 8th पे कमिशन आसे माने ता प्रीवियस कमिशन गुडा कमिशन रो मध्ये इंपोर्टेंट रहउची तो 7th पे कमिशन को किए लीड करथले एके माथुर लीड करथले started functioning in 2014 and submitted its report in 2016 तो ये थिला हमर 7th पे कमिशन विषय देखिथिले तो चलन तो पे कमिशन कोन सेटा जानि देबा the pay commission set up by the government of India को initiative decides the salary and compensation of central government employee जो central government employee मानकर salary मानकर compensation gratuity varieties of सब जिनिस सब डिटेलमेंट करिया पे गोटे कमिशन सेटअप करा जाउची तार ना होची पे कमिशन ठीक अछि तापर ए पे कमिशन कोन करबो कंसल्ट विथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मान को सहित कंसल्टेशन रे कोन बिफोर रिकमेंडिंग माने जो भी सैलरी स्ट्रक्चर हाई किबा सैलरी स्ट्रक्चर से डिसाइड करिया को जाउची तापर बोर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स मान को सहित से कोन से दिस माने तार कंसल्टेशन रहइबो तापर द रिकमेंडेशन आर ऑफन अडॉप्टेड बाय स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन ए जो 8th पे कमिशन बैक पे कमिशन जहां भी रिकमेंडेशन दबो स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस माने मते सेगुडा को अडॉप्ट करंती द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पे कमिशंस रिकमेंडेशन रिजल्ट इन इंक्रीज्ड कंजम्पशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ विथ एन इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज प्रति एवरी 10 इयर्स रे हमर कोन करछथि रिवाइज करछन पे कमिशन सेटअप करा जाय तार सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट्स ए पे कमिशन टू रिवाइज एम्प्लॉइज रेम्युनरेशन एवरी 10 इयर्स मन रखंतु एवरी 10 इयर्स रे ठीक अछि तो ये थिला हमर 8th पे कमिशन रिलेटेड न्यूज़ बहुत इंपोर्टेंट रोज तो देखो माने जो माने भी सरकारी चाकरी करबा को इच्छुक अछंदी बा प्रिपेयर करछंदी तो आपण मानको आ गोटे मोटिवेशन मिल पारे कोन जो कोन जे तो दरमा वृद्धि ठीक अछि आ गोटे हमर इंपोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर गोटे इनिशिएटिव कोन आसे गवर्नमेंट लॉन्चेस एक्ट टू प्रमोट बैटलफील्ड टूरिज्म व्हाट इज बैटलफील्ड टूरिज्म माने जोटी हमर किछि युद्ध होइतिला वार होइतिला सेठी हमर कोन से प्लेस रे टूरिज्म को बूस्ट करबा पई गोटे एप्लीकेशन लॉन्च करछन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एटा मध्ये इंपोर्टेंट को मिनिस्ट्री लॉन्च करछि के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आउट टूरिज्म मिनिस्ट्री जॉइंट कोलैबोरेशन रे कोन आउट इंडियन आर्मी जोटा कि भारत रणभूमि दर्शन कोन भारत रणभूमि दर्शन आप लॉन्च करा जाय लॉन्च बाय डिफेंस मिनिस्टर के लॉन्च करछन राजनाथ सिंह ऑन जनवरी 15 2025 जनवरी 15 रे हमर कोन सेलिब्रेट करथिले आर्मी डे सेलिब्रेशन करथिले सेही दिन रे कोन सेही दिन रे आ गोटा हमर इनिशिएटिव लॉन्च करा जायतला कोन भारत रणभूमि दर्शन आप के लॉन्च करछन राजनाथ सिंह लॉन्च करछन तो
एथिरे कोन हबा को जाउची लोकेशंस ऑफ द 1962 जोतिर हमर चीन सहित वार हेतला 1971 जो पाकिस्तान सहित वार है 1999 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट्स सियाचेन बेस कैंप और इवन द साइट वेयर द गलवाना क्लास 2020 रो गलवाना क्लास जोडी हेतला विल बी एक्सेसिबल फॉर टूरिस्ट ए तो ए सब जगह को कोन लोक मानक पई लोक मानक को एक्सेस दिया जिवो से टूरिस्ट मानक पई जो वार फील्ड गुडा करे ठीक अछि tourists can also visit the base camp of Siachen जोटा कि Siachen जोटा highest number of war battlefield the world's highest battlefield but going beyond but सेठी access दिया जिवो but ता ठो जदि अधिक दूर को जाउछन accessible करि परिबने because of the कोन challenges and acclimatization ठीक अछि तो ओ आर्मी चीफ भूपेंद्र द्विवेदी आर्मी जनरल आर्मी चीफ के जनरल भूपेंद्र द्विवेदी said that the initiative was part of broader efforts to promote historical holistic development of border areas and added the website will be one-step solution. जो रणभूमि app होची that will be a one-step solution for all information on traveling to historical battlefield ground destination. जो ये battlefield ground destination वाला को जिबा पाई से माना पे जहाँ भी किसी सब प्रॉब्लम माने solution one step solution होगा तो होची रणभूमि app दर्शन रणभूमि दर्शन जोटा को लॉन्च किए करछंती राजनाथ सिंह लॉन्च करछंती ठीक अछि राजनाथ सिंह लॉन्च करछंती और को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्लस टूरिज्म दीटा मिनिस्ट्री तो जॉइंट कोलैबोरेशन रे हिच और एम कोन बैटलफील्ड माने जो 1962 71 1999 2020 जहाँ भी वार प्लेसेस गुडा करे टूरिज्म प्रमोट करबा ठीक अछि नेक्स्ट असला आ गुडा हमर काली इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट इच कोन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अप्रूव एक्सपेंशन ऑफ सीआईएसएफ अर्थात सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स तो सीआईएसएफ रे वन दीटा बैटालियन को एक्सपेंशन करा जाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन ट्यूसडे सैंक्शन द क्रिएशन ऑफ 2 न्यू बैटालियंस केतना दीटा न्यू बैटालियन इंट्रोड्यूस करा जाय फॉर द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रे सीआईएसएफ रे एडिंग ओवर 2000 पर्सनल ए बैटालियन रे केते जन माने केते जन पर्सनल अपॉइंटमेंट हबे 2000 टू फोर्स टेकिंग द टोटल स्ट्रेंथ टू 2 लाख जो थरे टोटल सीआईएसएफ रो टोटल स्ट्रेंथ रहबो 2 लाख ठीक अछि. The expansion aims to boost the CISF's capacity to meet increasing security demands and bolster international security across critical infrastructure and key installation. आदरा कौन है बागु CISF तो capacity बढ़िबो तो कौन to meet increasing security demand जो दिनों को दिन security demand बढ़िबा को जाउची and bolster international security across critical infrastructure and key installations. गोटे हाइलाइट फीचर रहिला गोटे कोन महिला बैटालियन इंट्रोड्यूस हो जो दीटा बैटालियन भितरो गोटे महिला बैटालियन इंट्रोड्यूस होबा को जाउची तो ईच ऑफ द न्यूली सैंक्शन बैटालियंस विल कंप्राइज केते 1025 पर्सनल माने सी टोटली 2000 पर्सनल मानु अपॉइंटमेंट हो तो दीटा बैटालियन तो एवरी ईच रे केते टोटल रे 1025 पर्सनल मानु अपॉइंटमेंट दिया जिवो इंक्रीजिंग द टोटल नंबर ऑफ सीआईएसएफ बैटालियंस फ्रॉम प्रेजेंटली सीआईएसएफ बैटालियन के 13 बैटालियन अछि सेटा को एबे करा जेछि के 13 प्लस 2 मिसे की एबे हसला के 15 बैटालियन टोटली सीआईएसएफ अंडर ठीक अछि creating over 2000 new jobs. The new battalions will be led by senior commandant level officers. किए ताको लीड करिवे सीनियर कमांडेंट लेवल ऑफिसर्स माने ताको लीड करिवे दीटा बैटालियन को. The expansion also include the recently approved महिला बैटालियन इंपोर्टेंट जोटा कि महिला बैटालियन को कोन प्रथम तरह पे इंट्रोड्यूस करा जाय सीआईएसएफ रे which aims to further enhance international security with offering more employment opportunities. ठीक अछि तो दी सीआईएसएफ आसला जदि सीआईएसएफ आसला सीआईएसएफ विषय टिके स्टैटिक फैक्ट के जान दबा सीआईएसएफ के बे सेटअप करा जाय 1969 रे the CISF has evolved from providing security to public sector undertakings PSUs मानन को से कोन security provide करबो ता पई गोटे vital agency रोची हमर CISF critical infrastructure and offering security consultant services across both public and private sectors ठीक अछि आ जदि CISF आसे तार CISF रे चीफ ऑफिसर के अछंदी आरएस भट्टी
आरएस भट्टी अच्छा सीआईएसएफ रो चीफ ठीक अच्छे और को मिनिस्ट्री अंडर ये आसुचे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो ये थिला हमरो और तार टैगलाइन मध्ये मन रखि दियंतो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी सीआईएसएफ रो टारगेट कोन प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी होचे सीआईएसएफ टैगलाइन नेक्स्ट आसला आ गोटा हमर इंपोर्टेंट डे सेलिब्रेशन करा जैछि 150th नंबर आईएमडी अर्थात इंडियन कोन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट इंडियन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 150 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करा जायछि कार आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ताको के लॉन्च करछन प्राइम मिनिस्टर मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रेज द कंट्रीज एडवांसमेंट इन मेट्रोलॉजी अर्थात हमरो क्लाइमेट रिलेटेड क्लाइमेट और वेदरिंग में गोटे इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट होछि के IMD Indian Meteorology Department highlighting the unprecedented expansion of IMD's infrastructure over the past decade माने जो IMD रो जो एक्सपेंशन है देखिबा को मिलछि तो सेटा को हाईलाइट करछन्ती केबे एस्टैब्लिश हेतला 1875 रे एस्टैब्लिश हेतला IMD टर्न्स 150 ऑन जनवरी 15 मन रखन तो जनवरी 15 The meteorological department for the first time ever will showcase its own tableau आउ ताको हाईलाइट करबा करी हमर से कोन निजर ओन tableau कोडी से शोकेस करबा को जाउछ हमर रिपब्लिक डे रे से तार निजर ओन कोन tableau से फर्स्ट टाइम पे शोकेस करबा को जाउछ कि IMD निजर 150 डे को 150 फाउंडेशन डे को ऑब्जर्व करबा पय ऑन द अपकमिंग रिपब्लिक डे पैरेड तो ये हमर को मिनिस्ट्री अंडर रे जाउछ सेटा में मन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस अंडर रे जाउछ हमर के आईएमडी नेक्स्ट वन on the occasion of 150 Indian Meteorological Department 150th foundation day dita initiative by launch kara jayछि नुआ और पीएम नरेंद्र मोदी और ट्यूसडे will launch मिशन मौसम एटा मध्ये पछारे मिशन मौसम with the tar main focus kon रहबो with the aim of making the country a weather ready climate smart nation पूरे स्मार्ट नेशन कोन फॉर रेडी फॉर ऑल टाइप ऑफ वेदर ता पे कोन मिशन मौसम लॉन्च करबा को जाउछन्ती ता सहित गोटे आईएमडी विजन 2047 रिपोर्ट बा डॉक्यूमेंट से मध्य पब्लिश करबा को जाउछन्ती कि पीएम मोदी हमर कोन 150 आईएमडी फाउंडेशन डे ठीक अछि तो आईएमडी हमर चीफ की अछन्ती आईएमडी रो चीफ कहयो बोले आईएमडी डीजी रहउछन्ती आईएमडी डीजी की रहउछन्ती हमर के डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र जे कि हमर कोन जहां भी ओडिसा रे जने हमर कोन ओडिसा रे रिनाउंड पर्सन मृत्युंजय महापात्र से कोन ऑब्वियसली मन न्यूज़ रे बारंबार देखा जाउछ आपण माने देखिथिबे भी जतबेले साइक्लोन रिलेटेड किछ न्यूज़ आस्ते से तांको सहित माने इंटरेक्शन चलता होछि तो से होचन कि डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र आईएमडी रो फाउंडेशन के बेतला 1875 केबे 15 जनवरी 1875 ठीक अछि कोन कोन दीटा मेन लेसन लॉन्च कर जे मिशन मौसम आ गोटे आईएमडी विजन 2047 लॉन्च करबा को जाउछन नेक्स्ट असला प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कोन करछन गोटे डायरी इनिशिएटिव कोडी मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रे गोटे बहुत बड़ा डायरी इनिशिएटिव्स देछन कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू The President Draupadi Murmu virtually inaugurated the series of dairy and livestock initiatives in Mayurbhanj district. January 13 से बहुत बड़ा initiatives नहीं चलती aimed at bolstering rural livelihoods and tackling malnutrition. Rural livelihood को कोन ताको enhance करबा और tackling malnutrition को से एरिया गुडा करे कोन निजर ताको टैकल करबा पई बहुत बड़ा इनिशिएटिव नै चलती निजर होम स्टेट माने होम प्लेस कोन मयूरभंज रे तो the program spearheaded by the Department of Home Department of Animal Husbandry and Dairying under the Ministry of Co-Ministry under रे जाउछि DHD Co-Ministry under रे आसुछि Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying aim to significantly enhance milk production. Our main focus रहछि कोन milk production को enhance करबा and improve livestock quality को बढ़ाइबा and address nutritional challenges in rural areas. आ कोन होइछ एथिरे हमर दीटा इनिशिएटिव लॉन्च करा जाय गिफ्ट मिल्क इनिशिएटिव कोन among the prominent initiative launched was the cattle induction program कोन cattle induction program
जो थे कौन हम अंडर द राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंडर रे कैटल इंडक्शन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर द प्रोग्राम विच सॉस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3000 एतिर हाई कौन एटा मन रखन 3000 हाई जेनेटिक मेरिट कैटल टू बेनिफिशियर्स इन मयूरभंज रे कौन करा जबो हाई जेनेटिक मेरिट कैटल्स कौन से को कौन डिस्ट्रीब्यूट करा जबो इज पार्ट ऑफ broader productivity enhancement project being implemented by National Dairy Development Board NDDB National Dairy Development Board जो लोग implement कर चुके हैं. The event also marked the launch of Gift Milk Initiative, Gift Milk Program. On what Gift Milk Program, which aims to combat malnutrition and improve the health of children in the region. जो malnutrition देखा जाऊँगी, आउ समानकर कौन, आउ समानकर health condition को improve करिबा, एक कौन Gift Milk Initiative, जो थिरे will provide 200 milliliter of flavored milk. Fortified with vitamin A and D to around 1,200 school children in Mayurbhanj. 1200 children कौन माननको school children माननको Mayurbhanj रो से माननको provide करा जिबो कौन 200 milliliter of milk nourished with vitamin A और D. ठीक अच्छे तो ये थिला हमरो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मयूरभंज रे किछि जो कोन डायरी सेक्टर को रिलेटेड बहुत बड़ा से इनिशिएटिव लॉन्च करछन तेरे मेन डेटा जिन आसला गोटा आसला कैटल इंडक्शन प्रोग्राम जोटा कि हमरो राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंडर रे आसुची जोथरे 3000 हाई जेनेटिक मेरिट कैटल कोन बेनिफिशियर्स माने को प्रोवाइड करा जिवो ता सहित आसला सेकंड आसला हमरो गिफ्ट मिल्क इनिशिएटिव जोथरे 200 मिलीलीटर ऑफ फ्लेवर्ड मिल्क प्रोवाइड करा जिवो मयूरभंज रो 1200 कोन स्कूल चिल्ड्रंस माने को देखो बेटी दिया जाउछ गिफ्ट मिल्क इनिशिएटिव. तो ये थिला आज हमर ओवरऑल सेशन आशा करथबी आपण मानकर आज माने कंटेंट बहुत भल लागि दिबो. तो एई भली भाबे जदी डेली करंट अफेयर्स से अपडेट रहबा को चाहउछथि काइंडली जेनेक्स एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो टी जदी भल लागि त निज संग मानक मध्य शेयर करंतु आ लाइक टी निश्चय करंतु. धन्यवाद.